अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कबूलियत के चंद ख़ास मौक़े बताएँ। में से आसान एक तो तहज्जुद का वक्त, रात जब इशा से लेके जो फजर का वक्त है, बाज़ उलमा कहते हैं कि उसको हाफ़ कर लिया जाए, अगर आधा कर लिया जाए तो जो दूसरा आधा शुरू होता है। और अक्सर उलमा ये कहते हैं कि जब उसको 3 हिस्से में कर लिया जाए तो आखिरी तिहाई जब शुरू हो, तिहाई रात जब शुरू हो। तिहाई रात से मुराद वही वक्त होता है जो फजर से इशा के दरमियान, इशा से फजर का वक्त है, उसका आखिरी तिहाई जब शुरू हो जाए तो उस वक्त इंतहाई ख़ास मकबूलियत का वक्त होता है अल्लाह ताला का। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया पे तशरीफ़ लाते हैं और पूछने वाला, पुकारने वाला पुकारता है कि है कोई हाजत वाला, परेशानी में मुब्तला, बीमार वग़ैरह वग़ैरह, जो अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ फ़ौरन कबूल फरमा लें। दूसरा एक ख़ास वक्त जिस वक्त अक्सर हम लोग गफलत का शिकार होते हैं, वो फ़र्ज़ नमाज के बिल्कुल शुरू होने से बिल्कुल पहले का वक्त और फ़र्ज़ नमाज के सलाम फेरने के फ़ौरन बाद का वक्त। जब इक़ामत हो रही हो या अज़ान हो चुकी हो और अज़ान से इक़ामत के दरमियान का वक्त, वो इंतहाई ख़ास वक्त है दुआ की कबूलियत का। इतना ख़ास वक्त है कि ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से कहा है कि मेरे लिए उस वक्त में दुआ किया करो, जो अज़ान के बाद की दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा, वो बेसिकली हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है। उस वक्त जब बंदा अल्लाह ताला की बुलंदी बड़ाई को फ़िज़ा में पुकारा गया हो और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की जाए, तो उसी वक्त साथ साथ चाहिए कि हम भी अपने लिए कुछ ना कुछ छोटी मोटी दुआ जो भी जल्दी जल्दी हो सके। अक्सर हम लोग ऐसे गफलत का शिकार होते हैं कि अज़ान के वक्त मस्जिद में होते ही नहीं है, होते भी हैं तो बिल्कुल आखिरी वक्त में दाखिल होते हैं। मेरा ख़ुद ये हाल है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन इस वक्त कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़ाया ना हो। इक़ामत के लिए जब लोग नमाज़ के लिए खड़े हो रहे हों, उस वक्त अल्लाह ताला की इंतहाई रज़ा का वक्त होता है। अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि मेरे बंदे जो हैं वो अपने अपने घरों से निकल के आके एक जगह जमा हुए हैं और अब खड़े होकर मेरी इबादत करेंगे। इसी तरह सलाम फेरने के फ़ौरन बाद का वक्त, कि अल्लाह ताला की इबादत, ऐसी इबादत जो कबूल व मकबूल है इंशाअल्लाह, वो करके फ़ारिग़ हुए, फ़ौरन सलाम फेरा और उसके बाद दुआ कर ली। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि दोनों हाथ उठा के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी दुआ फरमाते थे और सहाबा के साथ भी इज्तिमाई दुआ फरमाते थे। मैं इंशाअल्लाह इंग्लिश में दोहरा दूँ इसको। देयर इज़ अ फ्यू ओकेजन्स ऑफ दुआ, मेकिंग दुआ, that are accepted, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us that they are accepted. Dua, if asked at that time, is granted very easily. One of those is the last third of the night. When you say the last third of the night, it is meant that from Isha time to Fajr time, if you divide that time, not from Maghrib to Fajr, but from Isha to Fajr, that time, if it is divided into 3, then the last third is that time where the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that Allah subhanahu wa ta'ala descends according to his station, whatever is the reality of that. Allah subhanahu wa ta'ala descends to the last sky, the sky closest to the world, and Allah subhanahu wa ta'ala himself calls after people, or someone calls on after people on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala, that whoever is in need, they should ask at this time. Whoever is sick, they should ask me at this time. Whatever they need, if they have troubles regarding their rizq, their money, their provision, they should ask at that time. And if they ask at that time, Allah subhanahu wa ta'ala grants very easily, very quickly. Similarly, two of the other easier times that we are negligent of generally is the time right before the start of a first salat and right after the completion of a first salat. So after the time that azan is called, before the iqama is said, when people are standing for salah, when people are waiting for salah, those times. And it is such an important time that the Prophet ﷺ has himself asked his ummati people, his ummati, to ask a dua for him at that time. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, that dua is specifically a dua for the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ does not need our dua. In fact, it is us who need to make dua for the Prophet ﷺ. It is our own benefit. Anyway, so the Prophet ﷺ has asked people to make dua. So when the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala has been called, when dua is being made for the Prophet ﷺ, we should also ask quickly for whatever our needs are. That time dua is accepted. And similarly, right after salah, when salam is said, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, that is also a time of a great happiness. Allah subhanahu wa ta'ala is really happy with his slaves. Before salah, Allah subhanahu wa ta'ala is happy that my slaves have come and they are now rising and standing for doing worship to me. And after salah, Allah subhanahu wa ta'ala is really happy when they have completed this worship. So at that point, the Prophet ﷺ is also known to have collected the Sahaba and made a collective dua, raised both his hands
turned towards the Sahaba. In one narration it said the Prophet ﷺ after salam would turn and face the Sahaba and make dua. In some other narrations it is narrated from other Sahaba as well. It is quoted from Sahaba, from numerous Sahaba. It's hard to count. Almost all Sahaba is proven from them that they used to make dua after making salam from first salam. So these things we should keep in mind. Inshallah, everybody has needs. Whenever we think about it, we should make dua in these special times. आज जो हम बाब शुरू कर रहे हैं किताब का आखिरी बाब है, अखलाकियात का आखिरी बाब, और एक तरह से तत्मा या इसको तकमील तक पहुंचा देने वाला बाब वो ये है कि हर काम इखलास और लिल्लाहियत के साथ हो. लिल्लाह से मुराद है जो अल्हम्दुलिल्लाह में आया है कि लिल्लाहियत यानी हर चीज़ हो तो अल्लाह ताला के लिए हो. टुडे द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंशाअल्लाह, it is the last chapter of this book. This volume was about akhlaq, correction of personality, improvement of personality, which is a very important thing that is asked of us by Allah subhanahu wa ta'ala. So to take that beautification of personality to perfection, ikhlas or lillahiyat is the last and the final thing, the top thing. Lillahiyat is from lillah, which is driven from alhamdulillah, where we say that all praise is only for Allah. So lillahiyat, whatever we do or whatever we do not do, all of that should be only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. ये अखलाक की चोटी है और चोटी तक पहुंचना सबसे मुश्किल होता है. It is the क्या कहते हैं summit of akhlaq, of correction of personality, and to reach the summit is the hardest part. And oftentimes this is the last thing that a person is able to achieve. Even great mashayikh and ulama, they are struggling with this. And sometimes the shaitan fools us that we are not going to do anything until we have ikhlas, until we have purity of intention. शैतान बाज़ औक़ात धोखा दे देता है कि हम कोई काम जब ही करेंगे जब हमारे अंदर इखलास होगा. तो वी शुड अंडरस्टैंड, ये बात समझने की है, that ikhlas is something that is achieved at the very end with a lot of hard work. बाज़ लोग, मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी किसी तरफ इशारा करना मकसूद नहीं है, कि वो कहते हैं कि भाई हम बैत की मिसाल ले लें कि हम बैत नहीं होंगे, हम तसव्वुफ़ के रास्ते में अल्लाह की राह पे कदम नहीं रखेंगे जब तक कि हमारे अंदर इखलास पैदा ना हो जाए. People say that we will not make bayat until we find that purity of intention in our heart, that we are going to do it only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Because sometimes people see that somebody has become bayat, they have gotten such and such other benefits, they have got respect in this world, they have got maybe more money or whatever, that kind of stuff. These things kind of confuse us. So shaitan puts an excuse in our mind that we will not do it until we have a pure intention. We are ready to do it and we are able to fulfill the requirements of it, and we will only do it when we are ready to step into that path. That is like saying we will do when we have done PhD, when we have done doctorate, then we will go to high school. Then when we have ikhlas, जब हमारा इखलास आ चुकेगा तब हम उसकी मेहनत की कोशिश करेंगे. भाई तसव्वुफ़, बैत होना, किसी शेख से जुड़ना, उसका ताल्लुक़ रखना, उसकी मेहनत करना, वो तो है ही इस सिलसिले की मेहनत कि इंसान की पर्सनैलिटी बेहतर हो. It is a struggle to improve your personality. If your personality has already found perfection, you are saying that when I have ikhlas, then I will enter that path. Then you don't even need that. You are already a doctor. You have already done doctorate. Why would you want to go to high school now? अब अगर पहले ही से इखलास मौजूद है, पहले ही से लिल्लाहियत मौजूद है, तो फिर शेख के पास जाके क्या मिलेगा? तो काम ही ये है कि उसकी कोशिश शुरू की जाए. इस तरह दूसरे अमाल हैं. नमाज में बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं कि भाई हमारी नमाज़ों का फ़ायदा क्या, हमारी नमाज़ों में तो कोई इखलास ही नहीं है, हम तो हाथ बांध के बस खड़े हो जाते हैं. हमारे दादा शेख डॉक्टर अब्दुल हई साहब आरिफी फरमाया करते थे कि ये जो हाथ बांध के खड़ा होना है, चाहे दिल कहीं हो चाहे दिमाग कहीं हो. माई ग्रैंड शेख डॉक्टर अब्दुल हई साहब आरिफी यूज्ड टू से दैट दिस ओनली मेकिंग द फेस ऑफ सलाह, द फिजिक ऑफ सलाह. सम पीपल से दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ us standing there when we don't have ikhlas, when we don't have the purity of intention, when our heart is somewhere else, when our mind is somewhere else. Hazrat used to say that only this alone, that you stand before Allah subhanahu wa ta'ala and fold your hands, that has made you superior. आपको ये उन लोगों से बेहतर बना चुका, सिर्फ खड़ा होना उन लोगों से बेहतर बना चुका जो अल्लाह ताला को मानते ही नहीं है. Has made you superior
than those people who do not believe in Allah subhanahu wa ta'ala to begin with. And if you think about it, what is the difference between a person who's headed to Jahannam and a person who's headed to Jannah? Belief in Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah पे ईमान लाना और अल्लाह पे ना ईमान लाना, यही तो फ़र्क है जन्नती और जहन्नमी का. तो अगर आप अल्लाह के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए, सिर्फ आपने हाथ बांध के खड़े हो गए और आपका ध्यान कहीं और है, आपका दिमाग कहीं और है, तब भी ये चीज़ अकेली ये फ़र्क करने के लिए काफ़ी है कि कौन मोमिन है और कौन मोमिन नहीं है, कौन अल्लाह पे ईमान लाया है और कौन अल्लाह पे ईमान नहीं लाया. So this alone is very important. Anyway, the point is that this thing is achieved with a lot of struggle, We have to take the first step, and whatever we are doing, we have to keep doing it. Hathani Rahimahullah used to say, Karte raho, darte raho, karte raho, darte raho. Keep on doing and keep on being afraid. Keep on having fear. Keep on doing it and never become fearless. Always be afraid that will it be accepted before Allah subhanahu wa ta'ala or not. Even the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his dua, from dua we learned that he has worried. The reason why we made astaghfar right after saying assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. We say assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. The first three tasbihat that we have to say is astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Then we say Allahu Akbar. What is the reason? The reason is that our salah will always be deficient. It will never be worthy of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is why we are making astaghfar to Allah subhanahu wa ta'ala. This is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam is doing. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying, Ma abadnaka haqqa ibadatik. I was never able to be a slave to you like it is a right of you to be a slave of. Like it is your right. मैं कभी आपकी इबादत, आपकी अब्दियत का हक़ अदा कर ही ना सका. और अल्लाह ताला को पहचानने का हक़ भी हमसे अदा नहीं होता. मा अरफ़ना का हक़्क़ मारिफ़तिक. We are never able to understand, we are not able to realize you, we are not able to be cognizant of you the way you are, the way you deserve to be realized, the way you deserve to be recognized. तो बहरहाल जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हालात हैं, जब सहाबा के ये हालात हैं, तो हम और आप किस गिनती में, किस शुमार में? हम ये सोच ही नहीं सकते कि जब हमारे पास इखलास होगा तभी हम कोई अमल करेंगे. हम तो बस जैसा हमसे बन पड़ेगा करते रहेंगे और डरते रहेंगे. We'll keep on doing whatever, in whatever shape, whatever form we are able to do anything. Our job is to keep on doing it and keep on trying and keep on being afraid. वो क्या है? وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. The great people of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala is praising them in the Quran, that these people are such that they do not waste their night. قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. For a very short time in their night, they do any idle thing, they do any useless thing, which is basically sleep and other stuff. But وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. When the morning comes, they do not become happy and content with what they have done in the night. All night, most of their night they have spent in ibadah. But Allah is praising those people that when the morning comes, they again make astaghfar to Allah subhanahu wa ta'ala. After all this whole night of worship, they are still doing what? Astaghfar in the morning. Why? Because our ibadat are never worthy. And the primary reason why they are not worthy of Allah subhanahu wa ta'ala is that they seldom have 100% ikhlas. तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इखलास की दुश्मन हैं. There's three things that are enemies of ikhlas. One is riya, very easily understandable. Riya, or having the desire to be seen, doing something. Riya, ru'ya, vision, to be seen. The second thing is sum'ah. Sum'ah is the desire to be heard. मेरे बारे में बात की जाए और मेरे बारे में बात सुनी जाए. एक ये कि मैं काम करता हुआ देखा जाऊँ, अच्छा काम करता हुआ देखा जाऊँ. सुमआ ये है कि मेरे बारे में सुना जाए. और उजुब ये है कि इंसान अल्लाह ताला को छोड़ के अपने अंदर मगन हो जाए. कोई चीज़ ऐसी उसको अल्लाह ताला की तरफ से नेमत मिले जिसको वो लेके अपने अंदर मगन हो जाए. रिया इज़ द डिज़ायर टू बी सीन, सुमआ इज़ द डिज़ायर टू बी हर्ड, एंड उजुब इज़ टू इन्वॉल्व इन वन ओन सेल्फ and forget Allah subhanahu wa ta'ala, that I am such a great person, that I have done such and such thing. Anyway, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this one famous hadith that we read in the beginning of the book, innamal a'malu bin niyat, that verily deeds depend upon niyat, the purity of intention, how astute your intention is, how pure your intention is. Today, inshallah, the two ahadith that we are going to read, and maybe more, particularly connect this quality of ikhlas or lillahiyat with the heart,
with the heart. And this heart, as we have said multiple times, is the reason why Anbiya were sent into this world. The primary field of work for the Anbiya, all Anbiya, including the Prophet ﷺ, is the qalb, is the heart. If that is corrected, the Prophet ﷺ has said that when the heart is corrected, when the heart is straight, every other part of the body becomes straight. आज जो हम दो हदीसें पढ़ेंगे वो है इखलास को ख़ास तौर पे जोड़ने वाली दिल के साथ, क़ल्ब के साथ, कि इखलास क्या है? दिल की सलाहियत है, क़ल्ब की सलाहियत है. तमाम अंबिया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी भेजे जाने का मकसद दुनिया में यही था कि वो दिलों पर मेहनत करें. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब दिल सही हो जाए तो बाकी जिस्म खुद ब खुद सही हो जाता है. हाँ, अगर दिल ही ख़राब हो तो बाकी जिस्म से जो आमाल पैदा होते हैं, जो आमाल इंसान करता है, वो भी ख़राब हो जाते हैं, वो भी गलत हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं. अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम. ये मुस्लिम शरीफ की हदीस. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को, यानी तुम्हारी शक्लों को और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है. Narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiallahu anhu, is copied in Sahih Muslim, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam is known to have said that Allah subhanahu wa ta'ala does not look at your faces and Allah subhanahu wa ta'ala does not look at your wealth, but Allah looks at your hearts and your deeds, your actions. इस हदीस की तशरीह में ये भी मालूम होना चाहिए कि पूरा का पूरा जो भी चीज़ें मकसूद हैं, यानी जो हमसे मांगी गई हैं, उनका खुलासा इस हदीस में मौजूद है. क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम, तुम्हारे क़ल्ब किस हालत में है और तुम्हारे अमाल किस तरह के हैं, यानी तुम्हारा ईमान कैसा है और तुम्हारा इस्लाम कैसा है, तुम्हारा ईमान कैसा है और तुम्हारा अमल कैसा है. In this hadith, all that is required of us is summarized. Where the Prophet ﷺ has said, وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala looks at your hearts and what is inside your heart, what is your belief, in other words, what is your iman, and what are your deeds. As a result of that iman, what are you actually doing? Which is our Islam, or our actions, our practical things that we do. Belief is something that we have in our hearts, and actions or Islam is something that we are actually doing. So this hadith summarizes all that is required of us. हाँ, जो अगली हदीस है या इसी की बाद हदीस हैं, जिस रिवायात हैं, इसमें लिखा है इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसादिकुम वला इला सुवरिकुम व अमालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम. बात और भी मुख्तसर कर दी गई कि अल्लाह ताला न जिस्मों को देखते हैं, न सूरतों को देखते हैं, ना ही अमालों को देखते हैं, बल्कि दिलों को देखते हैं. Allah subhanahu wa ta'ala does not look at your bodies, nor your faces, nor even your actions, but He looks at your hearts. इससे किसी को ये इश्काल हो सकता है कि भाई ईमान तो दिल में होता है, तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. जब अल्लाह ताला अमाल को देखेंगे ही नहीं, Allah subhanahu wa ta'ala is not going to look at even our deeds, but Allah subhanahu wa ta'ala is only going to look at our hearts. Then somebody might get confused कि भाई when Allah is only going to look at our hearts, then if we have iman in our heart, then we are good enough shape. The reason the answer to this is that a'mal are seen, a'mal are looked at based on what is in the heart. Innamal a'malu binniyat. Amal will be looked at, amal will be weighed based on what is in the heart. So if somebody says that I have good iman in my heart, but I am not actually going to do anything, then they do not have good iman in their heart. Because all the a'mal, a necessary outcome of iman is doing good deeds. No, a person will be a liar if they are saying that I am not doing anything but I have good belief in my heart. Because having good belief makes people do good things.
So if somebody is saying that I do not do anything, मैं कुछ करता कराता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ईमान बहुत पक्का है, मेरे दिल में बहुत अल्लाह है, मैं अल्लाह पे बड़ा यकीन रखता हूँ, वो झूठा है. He's a liar. He's lying. He's fooling himself. He's deceiving himself and nobody else. He is basically saying something that does not hold any ground, because ईमान ज़रूरी है कि ईमान आमाल करवाता है. जब दिल में ईमान होता है तो आमाल होते हैं, खुद होते हैं. ईमानदार आदमी बग़ैर आमाल के रहता नहीं है. अल्लाह ताला आमाल को देखेंगे क़ल्ब की हालत के मुताबिक, क़ल्ब की हालत के मुताबिक. The last hadith of Bukhari, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we've discussed it before, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that on the day of judgment, the last hadith of the Bukhari talks about deeds carrying weight. There's two kalimat, kalimatan there's two kalimat that are habibatan ila rahman. They are very beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. Thaqilatan fil mizan, ala al mizan. That they are, that they are very heavy on the deeds, the balance, the scale of deeds, but they are very light on the tongue. From this hadith, Imam Bukhari rahimahullah, and there's ayat of the Quran which he has used as a title of that chapter, وَقَوْلُهُمْ يُؤْذَنْ. The chapter is وَقَوْلُهُمْ يُؤْذَنْ. Their words, what their mouths produce, what their tongues say, that will be weighed. That will be weighed. So the explanation is that every single deed, be it done through your tongue, be it done through your body, it will be weighed. It will carry a weight based on what is in the heart, based on what is relevant to what is in the heart. हर अमल का वज़न होगा बक़द्रे इखलास. दिल में कितना इखलास है, दिल में कितनी सच्चाई है. Therefore, this is the reason why some people say one subhanallah, the subhanallah of a nabi, one subhanallah of a nabi, one step of a nabi, one blink of an eye of a nabi is much better than the whole ummah's hajj and umrah and siyam and salawat and everything. The reason is that they have reached a height of recognition of Allah subhanahu wa ta'ala, and they have purified their ikhlas. So their blink of an eye in the way of Allah, by the way, the whole life of a Prophet is in the way of Allah. So even their blink of an eye carries more weight in the scale of deeds than the whole a'mal of the whole ummah. पूरी उम्मत के हज, रोज़े, उम्रे, नमाज़ें, उन सबसे ज़्यादा वज़न है किसका? नबी की एक पलक झपकने का. क्यों? क्योंकि उन्होंने मारिफत का वो मकाम हासिल किया है जो उम्मत मिलके भी हासिल नहीं कर सकती, और उन्होंने मारिफत की वजह से इखलास का वो मकाम हासिल किया है जो पूरी उम्मत मिलके हासिल नहीं कर सकती. मेरे हज़रत डॉक्टर मुफ्ती इमरान हक फरमाते थे कि इखलास दरअसल ये है कि किसी के इश्क में गुम हो जाना, किसी के इश्क में गुम हो जाना. इखलास इज़, प्योरिटी इज़ to become involved in the love of someone. Become involved in the love of someone. Because when you become involved in the love of someone, you stop caring about anything else. Whatever you do to please them. One thing that is on your mind is somehow to please that person. If you are in the love of a person, if you are in the love of Allah subhanahu wa ta'ala, that nothing else will matter to you. Nothing else will matter to you. So जितना ज़्यादा इखलास आता जाएगा, the more ikhlas, the more purity of intention you have, the weightier one's deeds will become. इखलास कैसे पैदा होता है? How does ikhlas come in oneself? It comes, as already said, by the love of Allah subhanahu wa ta'ala, by falling in love with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala से मोहब्बत के नतीजे में इखलास पैदा होता है. And how do we get the love of Allah subhanahu wa ta'ala? As has been explained many times, that one of the few reasons that you realize that you love somebody is, number one, they are very good looking, they are very pretty. The other reason is that they have done a lot of good to you. Allah subhanahu wa ta'ala, there's other reasons written in the book, but these are the important ones, that if you increase in your recognition of Allah subhanahu wa ta'ala, if one increases in their recognition, in their understanding of Allah subhanahu wa ta'ala, how beautiful my Allah is, how beautiful the ways of my Allah is, and if one increases in recognizing the bounties, the favors that Allah has done to us, Allah is doing constantly to us, we start to fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala. We start to fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala. And when we start to fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala, as the love grows, proportionately corruption of intention, corruption of
heart decreases. It's very simple. जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का इश्क बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा गैरों की मोहब्बत, गैरों की फ़िक्र कम होती जाती है. अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे पैदा होती है? अल्लाह ताला के इरफान से. अल्लाह ताला का इरफान, अल्लाह ताला की मोहब्बत वो कैसे हासिल होगी? वैसे हासिल होगी कि हम इंसान किसी से कब मोहब्बत करता है? इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है जब या तो वो बहुत खूबसूरत हो या उसने बहुत ज़्यादा एहसान किया हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हो, बहुत फ़ायदे पहुँचाए हों. अल्लाह ताला का मामला ऐसा है कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा हसीन है, हमारी तसव्वुर, हमारी सोचों से बढ़ के हसीन है. और अल्लाह ताला के मामला हमारे साथ ऐसा है कि देते ही देते हैं. तो जब इंसान इन बातों पे सोचता है, इन बातों में फ़िक्र करता है कि अल्लाह ताला का क्या मामला है मेरे साथ, अल्लाह ताला मुझे किस तरह नवाजते हैं, और अल्लाह ताला कितने खूबसूरत हैं, और अल्लाह ताला के काम करने के तरीक़े कितने खूबसूरत हैं, और अल्लाह ताला के अता करने के तरीक़े कितने खूबसूरत हैं, तो इंसान ला महला बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे, बग़ैर कोशिश के वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में गिरफ़्तार होता जाता है. और जितना ज़्यादा अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती जाती है उतनी ज़्यादा गैर की फ़िक्र, गैर की परवाह कम होती जाती है. इसी को इखलास कहते हैं. दिस इज़ इखलास. One thing that should be mentioned is that according to the going along the lines of why should we keep on doing is that there is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where Allah subhanahu wa ta'ala has the Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us that a salah that is made without concentration, without devotion, is turned to the face of the reader, of that the person who is making salah, reading salah, like an old cloth, like an old useless cloth. एक हदीस है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज़ बेपरवाही, बेतवज्जुही से पढ़े उसकी नमाज़ उसके मुंह पर पुराने कपड़े की तरह फेंक मारी जाती है. So somebody asked Dr. Abdul Hisa Arifi rahimahullah that Hazrat, why should we even pray then? Because none of our salah is void of distractions. हमारी नमाज़ें तो हैं ही उसका मजमुआ कि हमारा ध्यान कहीं और, तवज्जो कहीं और, बेतवज्जी के साथ. हज़रत ने फरमाया कि एक पुराना कपड़ा मुंह पे फेंक के मारने की मार है और एक जूते की मार है. तो पुराना कपड़ा फेंकने से कम से कम जूता तो नहीं पड़ेगा ना, कम से कम अजाब का जूता तो नहीं पड़ेगा. An old cloth is being thrown at your face. At least you are not being tormented, you are not being burnt, you are not being given the punishment of fire. An old cloth being thrown into your face is a very soft punishment. It's a sign of rejection, but it's a very soft punishment. You're standing before Allah subhanahu wa ta'ala and you are doing something even absent-mindedly has protected you by the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam from hellfire, from the punishment of hellfire. यही बात है कि आमाल जैसे जैसे इश्क बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इखलास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वज़न बढ़ता जाएगा. इंसान करता रहे और दूसरे ये कि साथ साथ अल्लाह ताला से मांगता रहे, अल्लाह ताला से इखलास मांगता रहे कि अल्लाह हमारे अमाल हैं खोटे और आपके लायक नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जितना हमसे बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं. बाकी ये कि आप उसमें इखलास डाल दीजिए, हमारे दिलों की भी इस्लाह फरमा दीजिए, हमारे अमाल की भी इस्लाह फरमा दीजिए. So we should keep on doing and we should keep on asking Allah subhanahu wa ta'ala that Ya Allah give us ikhlas, Ya Allah give us ikhlas. When we don't have ikhlas, when we are not doing something that we are doing only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, then even the good things that we do may become a source of chaos, We see around ourselves in this whole world, in the setup that we are living in, there's so many people who are making claims of helping the ummah, who are making claims of doing good for the ummah. But if you look closely, they are the reason of disruption and confusion and chaos in the ummah. The Prophet ﷺ has said, if there is one thing that you will find in these efforts, there will be their faces, their outward appearance will be very good, very beautiful.
the presentation that they will bring forth before you, that kind of work that they are doing, the way they'll present it before you, it will be very beautiful, very perfect, very smooth. The Prophet ﷺ has warned us that Allah subhanahu wa ta'ala does not look at ajsad, does not look at your faces. Allah does not look at the outward appearance of what you are doing. कितनी जमातें यहाँ पे ऐसी हैं अमेरिका में भी जो बड़ा दीन का काम कर रही हैं, बड़ा ऊंचे दर्जे का दीन का काम कर रही हैं, बड़ा सेटअप है उनका. There's organizations in this country and all over the world who are working in the name of Islam, and they have a great setup, and they have very eloquent speakers, and they have everything from the worldly perspective. Their programs are huge, their setup is great, but the reason why they are becoming a source of chaos in the ummah, a source of division in the ummah, is because they do not have ikhlas. They are not doing it for Allah subhanahu wa ta'ala. If somebody is not doing for Allah subhanahu wa ta'ala, then they themselves go astray, and they take their followers astray. They take them away from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Mufti Taqi Usmani Sahib rahimahullah, who's at this time, he is one of the greatest scholars of Islam, well accepted in Arab and Ajam. When he was being trained by his sheikh, my father used to be in those majalis as well, Dr. Abdul Sahib Arifi. Mufti Taqi Usmani Sahib जब उनकी तरबियत अपने शेख के पास होते थे, वो आजकल दुनिया के चोटी के उलमा में, he wrote an answer to a question. When somebody would ask a religious fatwa from Dr. Sahib, he would not answer it himself because he was not a mufti. He would give to one of these muftiyan, Mufti Taqi Usmani Sahib, Mufti Rafi Usmani Sahib, Mufti Sahiban Mahmud Sahib. These people were sitting with him, the great scholars of well-known scholars in Pakistan. Mufti Taqi Usmani Sahib is well known beyond Pakistan as well. So when he wrote an answer, if I remember correctly, it was Mufti Taqi Sahib Usmani Madadilluhum, he wrote an answer and gave it back to Dr. Sahib to send to the asker, the person who had asked the question. Hazrat said only one sentence. ये देख लेना चाहिए कि खुदनुमाई तो मकसूद नहीं है. ये देख लेना चाहिए कि खुदनुमाई तो मकसूद नहीं है. Hazrat said that when he gave the answer to that question to Dr. Sahib, he said to his sheikh, he said only one sentence, that we should always check ourselves, we should keep on checking ourselves, that whether we are trying to show off or not. Are we not? We should be worried if we are trying to show off or not. Who is he saying this to? Mufti Taqi Usmani Sahib, who is well-known mufti at this time, and his bayan, his classroom is full of students. There's a long wait list to get admission into his institute of fatwa, into his class of fatwa. He also teaches Bukhari. He's the Shaykh al-Hadith. There's a long wait list for people who want to enter into his circle of Hadith. And what is Dr. Sahib saying to him? देख लेना चाहिए कि खुदनुमाई तो मकसूद नहीं है. That we are not, whether our purpose is to please Allah subhanahu wa ta'ala or to show off to people. This is something that we should be really concerned about, especially the people who are working apparently for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. There's one hadith, very, very worrying hadith, which says that the first three people who would be thrown headlong into fire will be the people who would have worked for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala in this world apparently. But it will be said to them that you did not do it in reality for Allah subhanahu wa ta'ala. We'll read that hadith when it comes, and they will be thrown headlong into the hellfire. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. But when we have lost sight of Allah subhanahu wa ta'ala, and the worldly benefit is our God, जब दुनियावी फ़ायदा हमारा खुदा बन जाए, हमें इस बात की फ़िक्र हो जाए कि हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, हमारे कितने व्यूज़ हैं, हमारी कितनी अप्रिसिएशन है, what kind of followers do we have, how many followers do we have, how many likes do we have, how many people listen to us. When that becomes our goal, when that becomes our God, then we lose sight of Allah subhanahu wa ta'ala, and the people become our God. And at that point, the Prophet ﷺ has warned us about such people. Before the world ends, there will be people, the Prophet ﷺ has told us that there will be scholars, there will be people who would be calling you towards deen, but the knowledge of deen would be restricted to their throats.
only restricted to their words, there will be nothing in their heart. Allah subhanahu wa ta'ala is going to look at the heart. Allah subhanahu wa ta'ala is going to look at the heart. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all sincerity of inaction. Ameen ya Rabbil Alameen. We'll make a quick dua inshallah and then have dinner. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala sayyidil mursaleen. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La ilaha illallah al-halim al-kareem. Subhanallahi Rabbil arshil azim. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.